A very good morning and warm welcome to all of you. Today, we all have gathered here for the digital inauguration of the AI Center of Competency powered by NVIDIA. I, Prachi Sauji, take this opportunity to welcome the distinguished dignitary gracing this occasion today at Ramdev Baba University. It is a matter of immense pride and privilege for us to welcome the Honorable Chief Minister of Maharashtra, Shri Devendra Ji Fadnavis, to this historic occasion, the digital inauguration of the AI Center of Competency powered by NVIDIA, a significant milestone in our university's journey toward excellence in artificial intelligence, high performance computing, research and innovation. I am deeply honored to welcome Padma Shri Satyanarayanji Nuwal, Chairman Shri Ramdev Baba Sarvajanik Samiti, Nagpur. It's my privilege to welcome our Honorable Chancellor Dr. S.S. Mantha. I am delighted to welcome Shri Shyam Sundarji Rathi, Vice Chairman, Dr. Purushottam Paldiwal, Vice Chairman, Shri Rajendraji Purohit, General Secretary, Shri Ashok Kumar Pacheriwala, Treasurer, Shri Kailash Chandraji Agarwal, Secretary, Advocate Pradeep Ji Agrawal, Secretary, Shri Ramdev Baba Sarvajanik Samiti, Nagpur. A special welcome to Mr. John Samuel and his team from Fort Rise. It's my pleasure to welcome our Honorable Vice Chancellor Dr. R.S. Pandey, Director Academics Dr. M.B. Chandak, and Director Student Affairs Dr. Y.M. Sonkhaskar. Let us begin this special occasion by offering flowers to Goddess Saraswati and Shri Ramdev Baba, symbols of wisdom, knowledge and blessing. I invite all respected dignitaries to kindly offer flowers and seek the blessings as we commence today's program. Thank you all the dignitaries. With the blessings of Shri Ramdev Baba, let us honor the spirit of Maharashtra with soulful Rajya Geet, Garza Maharashtra Mazha, a true expression of pride, culture and unity. I request everyone to rise and join for Rajya Geet. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू ताजा दरी दरी तुला नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा गर्जा महाराष्ट्र माझा काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी शिजला निघळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे ही रक्तदानी महाराष्ट्र माझा जय महाराष्ट्र माझा
Thank you all. Please be seated. To formally commence today's program, I invite our Honorable Vice Chancellor, Dr. R.S. Pandey, to deliver the welcome address. Honorable Chief Minister, Maharashtra State, Shri Devendra Fadnavis ji, Honorable Chairman of Shri Ramdev Baba Sarvajanik Samiti, Padma Shri Satyanarayan Duval ji, Chancellor Ramdev Baba University Dr. S.S. Mantha, Vice Chairman of Ramdev Baba Sarvajanik Samiti Dr. Purushottam Paldiwal, General Secretary Shri Rajendra ji Purohit, Treasurer Shri Ashok Kumar Pachariwala, Secretary Shri Kailash Chandji Agrawal, Advocate Pradeep Agrawal, esteemed executive members of Samiti and members of Samiti, Director of Students Affairs Dr. Yashwant Sonkhastkar, Dr. M.B. Chandak, esteemed faculty members, dear student friends, good morning to everyone and wish you a very happy Friendship Day. It's indeed great honor to welcome Honorable Chief Minister Sir at Ramdev Baba University for the inaugural function of AI Center of Competency powered by NVIDIA. Secondly, we are fortunate to receive his guidance, address and blessings for our first year students in their induction program Jnanoday. Sir, today I recall your visit to this campus on 21st October 2018. You were chief guest for our second graduation ceremony of Ramdev Baba College of Engineering and Management. Incidentally, it was also Sunday. And I distinctly remember your address to the graduates, the pass-out students. And today, our newly inducted students, first semester students, are going to listen to your words of wisdom. That day in 2018, I distinctly remember you talked about the disruptions due to digital technologies, particularly artificial intelligence. You discussed the impact of AI on industry, business model, future of work, and in society general. And we all know today what happened from 2018 to 2026. Today, the impact of AI on human civilization is considered as most profound transformation, most profound technological transformation and transition. If we see the motto of Government of India's India AI mission, it's very clear. Making AI in India and making AI work for India. The core objective of India AI mission is establish high performance compute infrastructure, nurture indigenous foundational AI models, widen data sets, and build deep technical capability. Today, in India, we are consumers of AI. We use American models, Chinese models, but India AI mission says we have to shift from just being consumers of AI to becoming creators of it. And to achieve this, we need to give high performance computing power in the hands of our young minds, youth, young students. Therefore, educational institutions serve as the foundational engine of the India AI mission. Academia will contribute by talent creation, data curation, research, and deep tech startups. This mission talks about large language model like Gemini, ChatGPT, primarily dealing with text. And now mission says we should work for indigenous large multimodal models, not only text, but image, audio, video. AI Kosh, India's dataset platform, and Sandbox, this environment for safe model testing. Sandbox, a private cloud
platforms are useful for studies in cybersecurity. Cybersecurity intersects AI in two directions. First, use of AI for cyber defense, and second, protection of AI model and data from outside world. At present, we know that AI is cloud driven, and cloud is the primary delivery highway of AI ecosystem, which is acknowledged by India AI mission. And the future of AI is hybrid AI, cloud plus edge, distributed AI. Not only the deep understanding of software, but the understanding of interface of hardware and software, that is edge. Sir, today we request you to inaugurate this hybrid AI ecosystem of RBU, which has 4 verticals. First is NVIDIA's AI supercomputer DGX B200, which gives high performance computing power. Second is Sandbox, a private cloud cybersecurity. Third, we are digital campus of Google Cloud. And fourth is a hybrid AI edge computing platforms of NVIDIA. At Ramdev Baba University, we are committed to contributing to this national mission by creating world-class infrastructure, nurturing talent, and promoting cutting-edge research. Sir, I am tempted to submit before you the recent developments at our institution. As we know, Shri Ramdev Baba Kamala Nehru Engineering College, RKNEC, was established in 1984 under the visionary leadership of its founder and chairman emeritus, Shri Banwari Lal Purohit, and continues to scale heights under the visionary leadership of our honorable chairman, Padma Shri Satyanarayan Jinwal. Sir, we have received the university status in 2024. We have implemented the National Education Policy 2020 in letter and spirit, and in accordance with the guidelines of Government of Maharashtra. In RBU, sir, we have now industry-powered programs. Computer science powered by SAP, MBA powered by SAP, electronics and computer science powered by IBM. Our all programs are designed with an interdisciplinary approach. Our placement record remained consistently outstanding with more than 90% placements for last 15 years. In last 3 years, our students and faculty members have published more than 1,000 index research publications and have filed over 1,000 patents, of which till date 500 patents have been granted. We have 360 strong academic team, 8 are postdoc, 175 are PhD. A Section 8 company, RCOEM TBI Foundation, is our official business incubator, which has curated over 90 ideas leading to startups. Sir, this year, in view of Shanti Bill, which permits private sector participation in nuclear energy, we intend to establish a laboratory in nuclear energy to give exposure to our students. And the second domain in which we are entering is quantum technology, especially quantum communication. We seek your guidance, sir, and blessings for our all future endeavors. Once again, sir, grateful to you for accepting our invitation and gracing this occasion. Sir, thanks a lot. Thank you. थँक यू सर. आजच्या या सुवर्णक्षणी आपल्या कार्यक्रमाला लाभलेले माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांची उपस्थिती ही आमच्यासाठी अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. सरांसाठी मी म्हणेन, विकासाची वाट दाखवणारे, महाराष्ट्राचा मान वाढवणारे, दूरदृष्टीच्या नेतृत्वाने नवी स्वप्ने साकार करणारे, जनतेच्या विश्वासाला सदैव न्याय देणारे असे आमचे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना मनपूर्वक अभिवादन करते. May I now request our chairman sir to felicitate the honorable chief minister sir as a token of our gratitude and respect.
Thank you, sir. Artificial intelligence is shaping the future, and Ramdev Baba University is proud to be a part of this transformation through cutting-edge infrastructure and industry collaboration. पारंपरिक संगणकांवर ज्या प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी पूर्वी तासनतास लागत असत, त्या आता NVIDIA DGIA B200 सारख्या अत्याधुनिक प्रणालीमुळे काही मिनिटातच पूर्ण होऊ शकतात. हीच ॲक्सिलरेटेड कॉम्प्युटिंगची ताकद आहे, जी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या नव्या युगाला गती देत आहे. आज या नव्या युगाची सुरुवात रामदेव बाबा विद्यापीठामध्ये होत आहे आणि याच वेळी प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा इंडक्शन कार्यक्रम देखील सुरू आहे. तर खऱ्या अर्थाने हा एक दुग्धशर्करा योग ठरला आहे. एका बाजूला विद्यार्थ्यांच्या नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात होत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अत्याधुनिक AI तंत्रज्ञानाच्या नव्या संधीचे दालन खुले होत आहे. आणि या महत्त्वपूर्ण प्रसंगी माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची उपस्थिती लाभणे ही आमच्यासाठी अत्यंत प्रेरणादायी बाब आहे. त्यांच्या शुभ हस्ते होत असलेला हा सोहळा विद्यार्थ्यांसाठी, संशोधकांसाठी आणि संपूर्ण विद्यापीठ परिवारासाठी एक अविस्मरणीय क्षण ठरणार आहे. We now arrive at the most awaited moment of today's program, the digital inauguration of AI Center of Competency powered by NVIDIA. May I respectfully request the Honorable Chief Minister Shri Devendraji Fadnavis to inaugurate the Center of Competency by pressing the digital launch button. Welcome to the AI Center of Competency, powered by NVIDIA at Ramdev Baba University. Compute beyond limits and innovate without boundaries. This state-of-the-art facility houses the NVIDIA TGX B200, one of the world's most advanced AI supercomputers, the first of its kind in central India. At the heart of this center is the NVIDIA TGX B200 with 8 NVIDIA Blackwell GPUs and 1.4 terabytes of high-speed unified GPU memory. Training an AI model that may take several days or may not even fit into a memory of a conventional system can be completed on the DGX B200 in a fraction of the time. This will enable the researchers to innovate faster, solve larger and more complex challenges. Think of medical imaging, satellite imaging, remote sensing, cybersecurity, computer vision, intelligent robotics, LLMs and Gen AI, autonomous vehicles, defense technologies, drug discovery, smart cities, digital twin applications. Think of NVIDIA TGX B200. The TGX B200 is far more than a faster GPU. It represents an entirely new generation of AI infrastructure. As India accelerates its journey to become a global AI leader, our greatest strength lies in the talent and creativity of our young minds. Beyond high-performance AI computing, Ramdev Baba University is proud to be an elite tier partner and certified digital campus on Google Cloud 3.0. Strengthening this ecosystem is our cybersecurity and digital forensics laboratory, featuring an advanced sandbox environment that enables realistic red team versus blue team cyber range simulation. The Juniper Center of Excellence further equips students with industry standard expertise in the enterprise cloud networking and network security. Together, these facilities create an unified ecosystem for artificial intelligence, cloud computing, cybersecurity, digital forensics, and next-generation networking, empowering future-ready professionals, accelerating Ramdev Baba University's vision of becoming an AI-native campus. From learning to leadership, from ideas to impact,
The AI revolution starts here at RBU. थँक्यू. मी याच्यासाठी एवढं म्हणेल की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते NVIDIA लॅबचे उद्घाटन झाले साकार आणि ज्ञान, संशोधन आणि तंत्रज्ञानासाठी खुले झाले प्रगतीचे नवे द्वार. Today's marks a significant milestone with the inauguration of NVIDIA Lab. We are honored to have with us Mr. John Samuel, Director and CEO, Mr. Ashok Srinivasan, Vice President, Sales Operations, and Mr. Dhanraj K, Senior Solution Architect from 4Tries. Now I would be like to request Honorable Chief Minister Shri Devendraji Fadnavis to kindly present the memento to the Mr. John Samuel and his team from 4Tries representing NVIDIA. Thank you, sir. I now invite our Honorable Chairman, Shri Satyanarayan Ji Nuval, to address the gathering. माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी महाराष्ट्र, शांत स्वभाव, कुशल नेतृत्व और पूरे महाराष्ट्र के चहुमुखी विकास के लिए संकल्पित आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, NVIDIA के सम्माननीय प्रतिनिधि तथा इंडस्ट्रीज़ के सभी प्रतिष्ठित महानुभाव, संस्था के महासचिव श्री राजेंद्र जी पुरोहित, कुलपति डॉक्टर SS मंथा जी, डॉक्टर पुरुषोत्तम पालड़ीवाल जी, अशोक पचेरीवाला जी, श्री कैलाश चंद्र जी अग्रवाल, एडवोकेट प्रदीप जी अग्रवाल, श्री YM सोन खासकर जी, रामदेव बाबा सार्वजनिक समिति के सभी ट्रस्टी, सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, डॉक्टर राजेश जी पांडे, कुलगुरु रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी, सभी फैकल्टीज़, यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों तथा उनके साथ पधारे हुए उनके सभी सम्मानीय अभिभावकगण, सभी विशिष्ट एवं विशिष्ट अतिथि, मैं आप सबका इस रामदेव बाबा प्रांगण में हृदय से स्वागत करता हूँ. मित्रों, अभी AI सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी पावर्ड बाय NVIDIA के उद्घाटन के शुभ अवसर पर मैं आप सबका हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं. आज इस महत्वपूर्ण AI सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी पावर्ड बाय NVIDIA के उद्घाटन स्वयं मुख्यमंत्री जी के मुख्य शुभ हस्तों के द्वारा ये संपन्न होना हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है तथा आप सबका हमको यह ऐतिहासिक दिन हम सबको सदैव प्रेरित करता रहेगा. मित्रों, शुभारंभ के बारे में हमारे शास्त्रों में, वेदों में बहुत सुंदर श्लोक है कि कार्य संपदम निमित्तानि सूचयन्ति. किसी भी कार्य के शुभारंभ को हमारी संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि किसी भी कार्य का शुभारंभ अपने आप में ही उसकी पूर्णता की सूचना दे देता है. तथा मैं इस अवसर पर NVIDIA के सभी अधिकारियों और विशेषज्ञों का हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस अनुबंध के द्वारा रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी के साथ विश्व स्तरीय केंद्रीय इस सेंटर की स्थापना की.
इसके साथ में फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्चर्स, ऑफिसर्स, इंजीनियर्स, स्टाफ तथा सभी सहयोगियों की हार्दिक बधाई देता हूँ। मित्रों, हमारे संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय श्री बनवारी लाल जी पुरोहित ने 1984 में इस संस्था की स्थापना की और आज ये विश्वविद्यालय इस रूप में उत्कृष्ट शिक्षा और अत्याधुनिक तकनीक के साथ साथ भारतीय संस्कृति के मूल्यों के प्रति समर्पित है तथा इसके साथ साथ हमने सदैव ये प्रयत्न किया है कि हम यहाँ पर स्पष्टता, पारदर्शिता तथा जीवन मूल्यों को हमेशा हमने ध्यान में रखकर काम किया है। NVIDIA DG6 B200 A1 सुपर कंप्यूटर विश्व की किसी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड है तथा जो हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टीज़ वर्ल्ड क्लास कंप्यूटिंग के क्षेत्र में इनको बहुत आगे ले जाएगा। यह केंद्र हमारे विद्यार्थियों के भविष्य की तकनीक नहीं बल्कि उनको वैश्विक स्तर पर आने वाली चुनौतियों के समाधान में भी बहुत ये उनको सहायता मिलेंगी। मित्रों, आज हमारे सामने चारों तरफ अपार संभावनाएं हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। हमारे पर्टिकुलर हमारे आज के युवाओं में और जो भारत के हमारे देश में जो बाहर भी जो हमारे अभी हमने पिछले कुछ 5-6 महीने पहले हमने करीब 8-10 इंजीनियर्स जो अभी हायर किए जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और साउथ कोरिया से। मित्रों, आपको ताजुब होगा को सबके सब इंडियन हैं, उसमें 2 तो अमरावती के हैं, 2 यवतमाल के हैं और उसमें से 3 कोल्हापुर के हैं। ये अपने आप में ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। आज इसीलिए आज हमारे सामने बहुत संभावनाएं, अपार संभावनाएं हैं। केवल हमें एक बात की आवश्यकता है कि हम अपने दिमाग को थोड़ा सा विकसित रखें और ज्ञान जो डे टू डे जो हमारी जो इनोवेशन है उसको ध्यान में रखें। तो मित्रों, हमारे लिए सब कुछ संभव है। जैसे कि वेदों में श्लोक है, पदे पदे च रत्नानि, पदे पदे च रत्नानि योजने रसकूपिकाः, पदे पदे च पद्मानि योजने रसकूपिकाः अज्ञानिको न पश्यन्तु बहुरत्ना वसुंधरा। मित्रों, इस वसुंधरा पे रत्न बिखरे हुए हैं। केवल हमें एक ही आवश्यकता है कि हम सबके समय के अनुरूप हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन पर ध्यान दें। तो मित्रों, हमारे देश को आने वाले भविष्य में आज हमारी स्थिति उससे हमको विकसित राष्ट्र बनने में कोई रोक नहीं पाएगा। और मित्रों, आज पूरे विश्व में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक नए युग में प्रवेश कर चुका है जो मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इवन घर की साफ सफाई हो, ये सब में उसकी मतलब महत्वपूर्ण एक भाग बन चुका है। लेकिन मित्रों, आने वाले भविष्य में इसके सबसे बड़ी हमारे पास ये चुनौती है कि आने वाले भविष्य में हम अपने नैतिक मूल्यों के साथ में मानव हितों को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। ये मित्रों हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज के करीब हजारों सालों पहले हमारे वेदों में एक श्लोक है छोटा सा, अपि मेरु समम प्राज्ञम अपि सूरम स्थिरम। यानी यदि भले ही कोई व्यक्ति मेरु पर्वत के समान स्थिर हो, बहुत चतुर हो, बहुत बुद्धिमान हो, परंतु मित्रों मनुष्य का अहंकार और मनुष्य के लालच उसको कुछ ही मिनटों में उसको विनिष्ट कर देता है। तो मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी विकसित हो जाए, लेकिन जो एक ह्यूमन इंटेलिजेंस
कैरेक्टर, एथिक्स और वैल्यू का जो मनुष्य जीवन के जो मूल्य है उसका स्थान नहीं ले सकती। इसीलिए जितना महत्वपूर्ण आज के तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे ज़्यादा वो महत्वपूर्ण है उसका सही दिशा में उपयोग होना। इसीलिए हम सबको एक सतत इसके ऊपर चिंतन करने की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगले वर्षों में ये AI सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंसी एनवीडिया के इस सहयोग से केवल रामदेव बाबा विश्वविद्यालय ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश के लिए रिसर्च, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। तथा मित्रों, मैं आपका अधिक समय नहीं लेते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपना अमूल्य समय देकर हमारा मार्गदर्शन किया, यहाँ पर ये शुभारंभ किया, उसके लिए मैं पूरे हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थँक्यू सर फॉर शेअरिंग युअर इन्स्पायरिंग विजन अँड गायडन्स. असं म्हटलं जातं की महान नेतृत्व हे भविष्याची दिशा निश्चित करत असते. आज आपल्याला असाच एका दूरदृष्टी नेतृत्वाचा सहवास लाभला आहे. मी माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना विनम्र विनंती करते की त्यांनी आपल्या प्रेरणादायी मार्गदर्शनपर संबोधनातून आम्हा सर्वांना मार्गदर्शन करावे. हिंद विश्वराज के सरसंस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन करता हूँ. भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्हें वंदना अर्पित करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से ये संस्था और हम सभी लोग लाभान्वित है. ऐसे पूज्य रामदेव बाबा जी, इनके चरणों में नमन करता हूँ. और आज बहुत ही हर्ष की बात है, रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी में एनवीडिया की ओर से पावर्ड AI लैब के इस उद्घाटन समारोह में हमारे बीच उपस्थित है हमारे चेयरमैन पद्मश्री सत्यनारायण नुवाल जी, डॉक्टर SS मंथा जी, डॉक्टर P पाल्डीवाल जी, श्री राजेंद्र पुरोहित जी, श्री कैलाश चंद्र अग्रवाल जी, एडवोकेट प्रदीप अग्रवाल जी, श्री अशोक कुमार पचेरीवाला जी, हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर RS पांडे, डॉक्टर YM सोनखासकर, डॉक्टर MB चांडक, मंचासीन सभी महानुभाव, यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अतिथिगण और उपस्थित सभी छात्र बहनों और भाइयों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि रामदेव बाबा यूनिवर्सिटी में एक बहुत ही अच्छे कार्यक्रम के लिए मुझे निमंत्रण मिला. हम सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय बनवारी लाल जी पुरोहित, इन्होंने रामदेव बाबा की स्थापना की और अपने स्थापना से लेकर लगातार नागपुर, विदर्भ, महाराष्ट्र और देश में एक अग्रणी संस्था के रूप में रामदेव बाबा ने कार्य किया है. और विशेष रूप से जब हमने देखा कि शिक्षा के निजीकरण में बहुत बड़े पैमाने पर एक वाणिज्यिक आधार तैयार हुआ था, एक कमर्शियलाइजेशन हुआ था,
ऐसे समय भी अपने आप को शिक्षा के मूल उद्देश्य के साथ जोड़कर रखना और कमर्शियलाइजेशन से परे रखना, ये कार्य लगातार बनवारीलाल जी पुरोहित इनके प्रेरणा से रामदेव बाबा में हुआ और उसी के चलते निजी संस्था होने के बावजूद देश के एक एमिनेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में रामदेव बाबा को लगातार देखा गया है। और आज जब एक यूनिवर्सिटी में ये परिवर्तित हुई है तो मेरा विश्वास है कि देश की उन चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में इसका शुमार होगा जिन्होंने केवल अभ्यास नहीं बल्कि अनुसंधान, रिसर्च के ऊपर बहुत बल दिया है और जिन्होंने शिक्षा को एक नया शेप दिया है, एक नया आविष्कार दिया है। और उसी कड़ी में मैं ये मानता हूँ कि आज का ये कार्यक्रम NVDA पावर्ड AI लैब ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग ये मानते हैं कि AI, सेमिकॉन and quantum computing are going to shape the future of this century. If we look back at all industrial revolutions, there has been a great lag of time between first three revolutions. The first industrial revolution started in 1740. The second started in 1860. The third started in around 1950. But look at the scenario today. We started talking about Industry 4.0 by around 2010. It started going to peak by 2016, 2017, and today, when we are in 2026, we are talking about fifth industrial revolution, which is around AI, deep tech, frontier technologies, and the world has started talking about the sixth industrial revolution now. The speed at which the technology is changing, the speed at which the way we conduct our business is changing, I think it is right time that our educational institutions embrace all the new technologies. For a long time, we were discussing CPUs, but today we talk about GPUs. Today, the quantum computing is playing around latency and the way it is accelerating all our research process, be it robotics, be it biotechnology, every single sphere of life is getting changed by the technological advancement. And today, AI is something which is going to change every walk of life. Somebody
who understands AI. A very big person one day told me, Mr. Fadnavis, watch out. In next 1,000 days, just 1,000 days, 75% of the jobs in our job market will be changed. The nature of job will be changed. That does not mean that jobs will go, but the nature of 70% jobs will change because of advancement of AI. And if at this speed we are changing, if at this speed the world is changing, it is imperative that our educational institutions adopt and transform their entire pedagogy, their entire way of imparting education. I am very happy that this state-of-art AI lab has been set up in Ramdev Baba. We all used to say that data is new oil, and the day came when the data surpassed the entire value of oil and became more precious than oil. And today, this data, with the use of sandbox and AI, can be converted into various models which not only help the industry but also helps the humanity. It is reshaping the healthcare system. I must tell you, in the month of January this year, I was at Davos, and I was interacting with the health minister of Switzerland, and she told me that every child in Switzerland who is born after 2000, in this new millennium, will live minimum for 100 years. Will live minimum for 100 years. Now, even in our country, the life expectancy has increased, and with advancement in medtech, the way new technologies are trying to tackle all the disease management has changed, and that is why AI is reshaping every sphere. I must also tell you that our primary sector, the primary sector of our economy, that is agriculture, is one sector which can be most beneficial from AI related technologies. In Maharashtra, the government has started its own app, Mahavistar. This Mahavistar is an AI powered app dedicated to agriculture. It has its own agents. Any farmer can talk to those agents. Farmer can ask any question in their language. Now we have also integrated the Adivasi Bhili language. So Adivasi farmer who speaks Bhili language can speak in their own language and can ask any question related to agriculture, agriculture practices, about
pest control, about using various micronutrient, and not just that, at a flowering stage, if he just takes a photograph of his crop, the AI model at the back processes it and is able to tell what is the stage of crop, assessing what will be the weather for next 15 years, what type of pest can attack the crop, what should he use, at what amount should he use, every single thing just by one photograph, and its processing via AI is changing the entire cropping cycle. It's bringing sustainability into agriculture. It is cutting down the cost by around 25% and enhancing the output, the productivity by 25 to 30%. This is the power of AI. Today, in any field, be it engineering, be it biotechnology, in any field, no one can study in silos. Gone is a time when we used to study in silos. Today, when we talk about frontier technologies and deep tech, it is all about smart manufacturing. It is all about smart building. And when we talk about smart manufacturing, it is an endeavor which actually carries together several technologies, and out of those several technologies, a new product is born or a new system is born. And that is why in the new education policy 2020, it is envisaged that we need to adopt a multi-pronged approach, not just one area, but several things are affecting those areas. And especially we know that AI and quantum computing will be changing everything in every sphere of life. And that is why we encourage the educational institutions to look at the job market, to look at the changes that are happening. We need to create cutting-edge human resource. We just don't require the graduates. We require employable human resource, meaningful human resource. And I'm very happy that for years together, Ramdev Baba has been doing that. It has been embracing all that is new. It is giving and transferring it to the students. And I'm sure with this new lab, today, sandboxing the data, sandboxing the use cases, we can create new models, we can train new AI models. And we know world over, no innovation or very minimum innovation has come out of industry. 90% innovation has come out of academia, has come out of universities. All the new technologies, all these
digital technological AI giants which we see today are born in one of the universities world over. And I expect, because I know that Ramdev Baba has been doing a lot in this sphere. You have been mentoring around 90 startups, and with this extra power which you have got through this lab, I feel that this would again become a center of innovation, whereby the next innovation of Central India will come from the Ramdev Baba University, and somebody from Nagpur, Vidarbha or Central India will be the innovator, by which it will not only help the ecosystem of innovation, but it also will become commercially viable. It will become a value proposition. I once again would like to thank Ramdev Baba University for inviting me to this historic occasion, and I'm sure that your journey of embracing all new technologies will continue in future as well. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. धन्यवाद सर. आपल्या प्रेरणादायी विचारांनी आम्हाला शिक्षण, संशोधन आणि राष्ट्र निर्माणाच्या कार्यात अधिक उत्कृष्ट योगदान देण्यासाठी नवी ऊर्जा आणि प्रेरणा मिळाली आहे. आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वेळ काढून आम्हाला मार्गदर्शन दिल्याबद्दल पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार मानते. ॲज वी कम टू द क्लोज ऑफ दिस मेमोरेबल सेरेमनी, मे आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन टू काइंडली राईज फॉर नॅशनल अँथम. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you all dignitaries for your gracious presence. I request our dignitaries to kindly proceed to the conference room. Before we close, I express my sincere gratitude to all guests, faculty members and students. Thank you very much.